ओके हेलो फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेबसाइट के लास्ट पार्ट पे पहुंच गए हैं और इस पार्ट पे हम लोग क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट अस पेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई विल गो टू कॉन्टैक्ट अस पेज, क्लिक ऑन दिस पेज एंड आफ्टर दिस यू विल सी वी हैव टू एडिट इट विद एलिमेंटर। सो एलिमेंटर से एडिट करते हैं इसको, राइट। नाउ फर्स्ट सेक्शन बनाएंगे हम हीरो सेक्शन। और अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने हीरो सेक्शन एज अ टेम्पलेट सेव किया था जब हमने और मेन्यू पेज बनाया था, राइट। सो हम उसी को रीयूज करते हैं। सो आई क्लिक हियर, राइट, एंड देन आई गो टू माय टेम्पलेट सेक्शन एंड इन माय टेम्पलेट सेक्शन यहाँ पे हीरो सेक्शन हमने लास्ट टाइम सेव किया था। वी हैव टू जस्ट इंसर्ट, राइट। सो अब देखोगे कि वो सेशन हमारा यहाँ पे आ गया। तो सेक्शन कॉपी हो गया, राइट। सो ये इसी को अब हमने मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जो सब हेडिंग है हमारा ऊपर, आई एम गोइंग टू चेंज इट। सो आई एम गोइंग टू राइट इट दैट्स वाज बेस्ट इन टाउन, राइट। देन फॉर अ सीजनल मेन्यू वी आर गोइंग टू राइट गेट इन टच, दिस वन यू कैन डू। एंड दिस कंटेंट आई डोंट नीड, सो हम इसको राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, दैट्स इट। और यहाँ पे आप अगर पिक्चर चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो रेस्टोरेंट की। यू गो टू एडवांस एंड देन यू हैव टू गो टू बैकग्राउंड सेक्शन। इन केस अगर आपको लगता है कि आपको इमेज चेंज करनी है तो आप लास्ट में से कोई भी इमेज जो हमने अपलोड की हो वो आप इमेज एक बार अपलोड करके उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर मी दिस इमेज इज परफेक्टली फाइन, सो मैं इसी इमेज को रहने देता हूँ, ठीक है, राइट। दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू। नाउ दिस इज आवर हीरो सेक्शन। नाउ अब मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ सिंपल सेक्शन, एक स्ट्रक्चर लास्ट सेक्शन जिसमें हम लोग एक विजिट ले आते हैं इनर सेक्शन एंड लेट्स क्रिएट इट। सो ये 2 कॉलम्स हो गए हमारे पास एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू डुप्लीकेट इट, सॉरी आई एम गोइंग टू ऐड न्यू कॉलम ताकि 3 कॉलम आ जाए। नाउ आई एम गोइंग टू ड्रैग दैट इमेज विजिट जो लास्ट टाइम हमने अर्न वेन्यू में सीखा था। सो मैं एक इमेज बॉक्स लेके आ रहा हूँ, ठीक है जी। एंड सबसे पहले हम लोग इमेज अपलोड करते हैं। So go to upload files, go to folder जहाँ पे हमारा इमेज है, let's go to graphics। इस बार मैं तीनों इमेजेस इकट्ठी अपलोड कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। सो आप एक से ज्यादा इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये तीनों इमेजेस मुझे चाहिए which I'm going to upload, right। In this particular case I need a photo of call, so I'm going to insert it, right। If you want to change its width you can come here and change its width. It's 30, so you can set 20, let's suppose, or you can set 10 also. In my case I'm going to set it 20. In content I'm going to write phone, right, and what we're going to do is so इसका जो कलर है I'm going to set to basil। नीचे भी हम कंटेंट पहले लिख देते हैं। So I'm going to write like for example, it will take a content, we update this। Now we'll go to style and style में जो इमेज सेक्शन सॉरी कंटेंट सेक्शन है उसमें हम सबसे पहले कलर कर देंगे बेसिक, ठीक है। एंड टाइपोग्राफी to give off button text, so this is enough, right। and नीचे जाके for description also I'm going to do a basic and typography I'm going to keep it button text, ठीक है। और what we are going to do is I take normal text, that's it। this is a typography that we want, right। so if you come here, in case you want to modify you can come here and you can modify it according to your wish, ठीक है। मुझे अभी इतना ही चाहिए। if you want कि थोड़ा padding ठीक हो जाए तो you select this, तो go to inner section, select your column, go to advanced, in padding you will unlink it, so you can give your padding like 10, 20, right। so this one is enough। now I'm going to update this,
राइट. सो ये मेरा एक सेक्शन हो गया. नाउ आई हैव टू जस्ट राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट दी सेक्शंस, राइट. और ये वाले सेक्शन आई कैन ऑलवेज डिलीट. सो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं. The only thing that you have to do is change upload this one. So I'm going to take this email. For example, I'm going to write an email. So, right. So style, change the content, change it to Raspberry. Same is for typography. I'm going to change. I'm not going to keep it uppercase. So I'll do in this particular case. I'm going to let it default. Okay. So this is our title. For title, let it be uppercase only. So for this email description, I'm going to take a Raspberry, and this case where we can always see it has to be straight. So this is what I will do. Same section where we'll go there and we'll take an image of our dress. We'll write here address. We're going to change the address. For example, 6B Maridhara. 6B Maridhara. Right. This is what I have to do. And then I'll go to style. And in style, जैसे हमने बाकियों के लिए किया था, I'm going to change its color. So I'm going to change its color to gray. Grape. Same for title and for description. I'm also going to do that. ठीक है जी. So ये हमारा section contact us का बन गया. राइट. सो दैट्स इट. ये हमारा एक सेक्शन है. अगर आप देखेंगे ये पूरा बन चुका है. इन केस आप रिस्पॉन्सिवनेस देखना चाहते हैं, यू कैन गो टू responsive section, and in responsive section you can check it on a tablet. If you think it is looking good in tablet, you can do that, right. Then you can always go to a mobile phone section. So we have to check कर सकते हैं. Think it is fine, then it's good, right. And then that's it. So ये वेबसाइट हमारा कंप्लीट हो गया इस सेक्शन के साथ ही. So now this is the end of our WordPress basics course, introduction to. Soon we will be coming up with new videos जहाँ पे we will be talking about the e-commerce websites. तो हम e-commerce website बना के रखेंगे. So thank you very much. See you soon.